Time show. Bam bam. Yes, you heard it right. Bam bam. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam bam. Bye-bye. Namaskar. Namaste. Namaskara. Vanakkam. Khushamadid. Assalamualaikum. Sotsyakhal. మీకందరికి వందనము. Jai Swami Narayan. जय श्री कृष्ण. Jinindra. मैं इस्माइली भाई बंधु को बोल दे अली मदद. मौलाली मदर बोलते हुए सारे फीजिए मतलब को बोलेंगे हम लोग नीसाम बोला हम आ गए हैं बंधुजान. आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं वाल्तू बाबा And of course, myself, Faltu Rani, लेकर आप एक और drive time show that's going to make it totally exciting and totally mastani. आज बंडजान है मातृभूमि मंगलवार मतलब we talking मातृभूमि a land of origin बंडजान जहाँ से हम लोग हैं. Well, everybody out there celebrating, well actually everybody holding Indian passport for you guys. Republic Day, because if you're here in this world and America with the Republic with a passport, a blue passport which is an Indian passport, you should be thankful that we actually have Republic Day. That is the way we became republics. Republic, right, Faltani? Right. Aaj ka show is going to be all about Abhinajan. It's going to be called, you can also call it a day, right, Faltani? Yeah, I Yeah, guess so. and of course, all our Bengali bandhus who are Bangladeshis, we have a bunch of Nepali bandhus listening to us. We have also a bunch of Pakistani bandhus listening to us. All of you, that's why I call Matrabhumi. Wherever you're from, doesn't matter. You all are probably becoming republics anyways, because most of the people we know South Asian, Faltani. Huh. But you know, South Asian actually is a particular region which actually has total republic concept. South Asian. But at the same time, we all became republics. That's true, Yeah, actually. and Radha Bachchan, aaj Faltani again is looking kind of lost. I don't know, she must be doing multitasking. Why am I asking is a question I ask myself. But anyways, Bachchan, I am going to start the day off with a wonderful song and I'm going to ask you a question. The question is very simple. Tell me something what you're proud of, you know, with of being where you are from. Like what, Altava? Give us an I example. don't know. Like for instance, I'm proud that I'm from, you know, of Indian origin. Huh. Because of the long heritage culture which we have. Huh. Does it make sense to you if I say that? You're proud of the heritage, the culture that we I am have. proud. That's why. No, that's what makes me. That's like my pride for the evening, right? It's the longest civilization, so to speak. I would say that, and also the most longest civilization, the oldest civilization. Also, you can say it because the Harappa Mohenjo-daro came in that time itself, right? Yeah, the Indus Valley civilization. Correct. Yes. And but it's gonna play songs. Nothing bad about the place, but of course, good things of what we ever celebrate from our thing, right? Correct. Whatever it is, right? Right. And of course, how can I forget? I came out of a wonderful show too. Our Srikanth Gudi showed a live concept about a particular event which happened, a test cricket match. Indians actually got that beat Australia. Oh my God, they They were like the underdogs, right? they were underdogs, yeah, exactly. And, Yeah. and of course, that's the spirit of India, man. Seriously. Huh. No matter what people say, that's something awesome about us. We are the spirit. Right. And of course, Bachchan, he has a beautiful song for you guys. Aapki call, tell us what you're proud of being. It's what's Desi? Call us. I like that, Faltani. Proud to be Desi. Doesn't Proud matter to be which state you belong to. Dehoti bole to Dehatis with the heart of gold. We're totally Exactly. excited and totally hot. Yes. Because and you're right now in America. एक बार झट से phone number दे दे Faltani. Like people say, I don't know what number to call. Yeah, 408-912-2479. What is it? What is your... Today is the time to tout your day pride. Yeah. Panujan, agar aapka koi desi pride hai that, you know... I'm proud because we have so many different types of foods, languages, dialects. Hey, Faltani, here's what I'm going to put twist right now. Yeah. You know me, right? Always when you bring something, I put a twist and send it back to you. Yeah. The twist over here is you can only pick one. Huh? Yeah. One thing, you can't say like, you know, I'm proud of the fact that we have a high population. I'm proud of the fact that we actually came with the corona antivirus automatically. Blah, blah. No, only one. Why not? Why? They should pick one. One thing. One thing only. What like totally makes you like, I'm desi. Doesn't like matter. you beat It your doesn't- chest and Yeah, tell but the doesn't whole matter if world. we're repeating what somebody else has shared. Doesn't matter. You got to give us a call today, right? Yeah. Deepa, I saw you actually logged into the show. I need to see you call in first, okay? Yeah. 408-912-2479. Vande Mataram to you. Deepa, you also, right? Vande Mataram. And one more Vande Mataram to Meenakshi that joined us all the way from Boston. And thank you so much for that. And people are now joining. Where are they joining you from? They're joining online, Baba. We're on air right now, online with our show. We already gone live on
Facebook. The first radio show to go live on Facebook, Burja was us. Whether believe it or not, go check out with Mark Zuckerberg, okay? Right now, Burjan, a song for you guys. Start thinking about what you got to be proud of to be Indian or Desi, Burjan. Give us a call, 912-2479. That's why, Burjan, thoda andaz, thoda kya zyada hai. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हमें नाज है. That's one thing sure, Father. खुद पे तो मुझे बहुत नाज है, Father. You know that, right? मुझे मालूम है बहुत. तुम्हें अपने आप पे बहुत नाज है. But second born कैसे होता है? We love our country, man. You know why, Father? Bye. गाना सुनो, मालूम होगा. जाने ना हमको ये ज़माना चाहो तो हमको आज़माना यारबाज़ हम जानसाज़ हम इश्क़बाज़ दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया. That's right, Burjan. India Wala song from a movie where totally was a rip-off. Happy New Year of Farha Khan. इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. यूं तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा. ओ हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जग ये भला या बुरा. जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी. पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. You know, इत्तेफाक की बात है, Father. इसमें गाना ना जीत ले हार के, right? हाँ. That's exactly what happens in cricket also. The test cricket, right? हाँ. They lost really bad. हाँ. At one point, something like. हारी बाजी को जीतना हमें आता है. Hey, hi, Exactly. Father. Anyway, song सुनो, enjoy करो, call करो, Burjan. What's happening? नचा दे हम इंडिया वाले. आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले. जा देते उसको जहाँ देते अपना ईमान देते जिसकी भी बाहें गले में डाले. दुनिया से हमको क्या ले जाना यारों के दिल में हो ठिकाना. एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले कहते हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे उंगली पे सबको नचा दे. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. Yeah. Of course, Deepa, I totally agree with you. You're saying, अरे पहले गाना सुनो तो I love my patriotic song. ये patriotic कैसे बनता है, Father? Isn't it a patriotic song? Father ने क्या करी? तो what are you doing, Father? क्या सॉरी, कर क्या मैं रहे? सोच रही कहाँ से आ रहा है साउंड. कहाँ से आ रहा है साउंड? भाई गुड, तेरे कान में जा रहा है साउंड. तेरे को you can't hear, right? वह बच्चा थे Father ने कैसे करते थे? Don't worry about that. माफ कर दीजिएगा इसको. ये थोड़ा मेरी शागिर्द है. I'm trying to train her in the right way. तो आ जाएगा. Anyways, हाँ. फालतू नहीं, क्या हुआ देखते तू यार, तो चिंता मत कर. हमारे इंडिया में तो द्रोणाचार्य ने बात की है, बड़ा महान गुरु थे. कलयुग के बारे में बात करें जहाँ पे कुछ उल्टा होता है ना. That's what I'm proud of our Indian culture.
Acha. So Alto Baba says that the fact that it's so many years, it's like so many millennia. Oh, actually, that's what I'm proud of. that he thinks that we are he's proud. That makes him toot his desi horn, so to speak, right? Toot toot. And now it's time for you to toot your desi horn. But मंगलवार में अपने भातुबड़ी के बारे में बात करें. What makes you proud to be of Indian origin? Let's I put know. it that way. I'm surprised people are not calling for Dhulani. Oh my god. Uh, Oh my god. By the way, if at all you think, oh, I'm not proud of these Bollywood actors, they are not you proud of at all, please. I don't know why you create all this thing. Think about stuff which makes you proud, yes. right? And I'll tell you, Jen, I started off this beautiful song for you guys. I Huh. like this song a lot. You know why? Bye. It's so much of what I feel. November 2nd actually has a second born who are like, have an automatic connection of sentiment and everything else. It's a very, I know, you'll understand, Father. You're not November 2nd born, so. I'm not November 2nd born, and I don't want to be also. Alto What? Baba. I don't want to be also. Thank you very much. Well, okay. It Uh, is not about patriotic songs. You can call up and tell about a song which actually praises your motherland. but it, Matrabhumi. yeah, you could talk about a thing that well, the most important thing that we want to know, Banjan, is we've come here. I know many of us are proud to be American too, because we're also American citizens. We are Indian Americans now. But Voting for Biden, yeah. that doesn't take away from the fact that वो क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च वाह, वाह। स्वर्गादपि गरीयसी. वाह, क्या बड़ा So, शब्द इसके- जैसे माँ का और बच्चे का कनेक्शन रहता है, वैसे ही मातृभूमि से हमारा कनेक्शन बना रहता है, Banjan. Because you can take an Indian out of India, take it out of the Indian. Oh my god, spoken like a true stereotypical person who's a non-Indian. Yes, exactly. So now we are going to ask you, Banjan, to call in and share. Okay, what is it that 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 you feel proud to be there? There should be something, right? There should be something that makes you proud to be born of that land, or to be somebody who's carrying forward the heritage of that land. What is that? 408-912-2479. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम में. कौन है जी? Namaskar, this is Deepa. Hi Deepa, how are you? I'm good. How are you guys? Wonderful, Happy Deepa. Republic Day. Happy Republic Day. to you गणतंत्र too. दिवस के शुभकामनाएं. हार्दिक शुभकामनाएं. Wow. हाँ. What does Ganatantra mean, Fadwani? गणतंत्र रिपब्लिक. मतलब क्या गणतंत्र का ब्रेकडाउन करो ना अबे please. रैंडमली जो बोलने का है. हाँ, कुछ भी बोलता रहेगा. Hey, don't you know what Ganatantra means? आल्तो स्टॉप. दीपा विषय से भटको मत आल्तो बाबा. ओहो दीपा से बात करो. ओहो आंसर नहीं मालूम तो विषय से भटको मत है. हाँ. Deepa, come on, Deepa, tell us what is one thing you're proud of your Janmabhoomi or your Matrabhumi, sorry. हाँ, वैसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने बोले एक ही बोलना है. Only one. Mm, You can say I would Altobabas say from there. food. I would say food. You can say Altobabas from there, no? What is wrong with saying Altobabas from there? Oh, why should she say that? Why are you feeding I Alto? don't feel any idea. She's feeding food in my I mind. even ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ, आल्तो बाबा. So, मतलब that's not something to be proud of, no? I'm talking, yeah, मतलब, I'm talking about something to be proud of, already. What are you talking? Allah, देखो यही है ना, यही तेरा politics. शुरू हो गया. देखा उसका पॉलिटिक्स शुरू हो गया. मैंने बोला something to be proud of बोलती है, वो बोल रही है. He says because when Alto Baba is from India, so you should be proud. But when Deepa says I'm also from India, you say nothing to be proud of. अरे it has got to be. अरे अपना मुंह मियाँ मिट्टू कभी नहीं करने का, दीपा. Oh. अपनी मुंह मियाँ मिट्टू कभी नहीं करने का. You should never toot your own horn. अच्छा, अगर अच्छा, कौन कर रहा था पहले? देखो अगर पूछ रहे दीपा. हाँ, पूछ. क्या बोला? अरे देखो अगर सुनाई नहीं दिया. क्या बोला? फिर से बोलो. उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. यही हाल है आल्तो क्यों बाबा का. डांट रहे हो मुझे यार? मैं गरीब को क्यों डांट रहे हो? देखो अगर फालतू ने बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ इंडिया बिकॉज़ ये अजीब किस क्या? दीपा नहीं कुछ नहीं. अजीब की जानवर. अजीब किसका गाना? किसका मतलब क्या? किस्म का जानवर अच्छा. है. She's an अजीब किसका I नाम? thought like you're talking about that's what it was. वो Yeah. क्या दीपा, हम लोग इतने लवेबल है जो सभी लव्स आपको सिर्फ लव किस आता है. अल्ट्रा या तो अभी बताओ व्हाट इज इट दैट मेक्स मुझे खाना मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक ही बोला जाए आई कैन से, या फिर कोई और अगर फूड बोलेगा तो मैं नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज द रहने पहनावा, द टाइप्स ऑफ पोशाक. हाँ. यस
Hey, but I'll tell you, no, the food is fine. You know, I love the concept you brought of food because the diversity in Yes. food, Falguni. हाँ. And I believe if हर you look एक at, स्टेट का अलग ये है. हाँ, अलग ये है. And second thing is, notice one thing about India, okay? India is a huge country, Huh. right? Huh. We are the largest democracy, Right. And we have so much of diversity. Huh. Every culture, every village probably will have a different thing. But majority-wise of Falguni, if at all of somebody a food, they'll be able to identify with from India. Huh? Yeah, Yeah. everybody in the north would have tried something like kurma. Somebody in the south would have tried tandoori. They would have known what rasgulla is because go all over. Not just that, also बाबा कि जो मतलब हर एक एरिया का खास उपजाऊ ये है, उसका the crop is different, उस हिसाब से उधर डेवलप हुआ वो फूड. ऐसा नहीं कि हर लाइक यूनिक चेन रेस्टोरेंट चेन जैसा नहीं कि हर जगह नहीं, कुछ नहीं. कुछ जगह की वही मिलता है वो. No, but what I am saying is each of us, right, we know of the foods served so many miles away from us. Correct. Is what I'm trying to say. I'm saying how intertwined and mingled we are that we know about all these things. Like, you know, a person sitting in Delhi will know what a dosa is, though they will say that dosa. Right? But again, a person sitting in Mumbai will know what rasgulla is, right? A person sitting in Karachi will know what a pav bhaji is. Ah. So I'm saying that लेकिन how वो तो बाद में हुआ, लेकिन बाद में की बात नहीं है बाबा. जैसे डेवलप हुआ ना, कुजीन कैसे डेवलप हुआ. Baba, बाद में की बात नहीं है. Over here, you tell me how many of you people have actually tasted a Philly sandwich over here. My point is that, like, you know, though we are separated by geographically, we have actually tried all these things. People bring it along with them, and we have mixed culture. Okay. That's what I'm proud of. But there are many people who wouldn't have tried it, Altu Baba. There's many people Correct. who wouldn't know what a dalma is. I'll tell them where to come. Yeah. I know. तो मेरा वो आपने मुझे पूछा, मेरा हाँ. वो that makes it special कि आपने अपने जगह का वो खासियत है जो उधर का जो ग्रो करता है, soil quality, हाँ. that makes it so rich. Yeah. So you can do the same thing other place also, but you won't have that kind of taste and taste. Exactly. So, tell you one thing, मेरी Deepa. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मेरे मम्मी पापा गए थे दिल्ली कुछ मतलब they went to Agra for some tour and stuff like that. हाँ. बोल रही थी क्योंकि हम लोग अभी इंटरनेट का जमाना है, हम लोग भी घर में इधर भी परोठा बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कर्नाटक में हम लोग नहीं बनाते, मिलता भी है रेस्टोरेंट में. तो मम्मी ने बोला उधर उसने जो परोठा खाया, उसने बोला दिल्ली में जो मैंने खाया उतना अच्छा परोठा मैंने कहीं भी नहीं खाया. Wow. She still keeps telling me that, like, Ah. I don't know, the quality of oil and the air, all those things make it more. That You is know? why, Deepa, whenever I get this review from Gopal about your food, I tell him I can't judge until I eat it. What? Gopal keeps raving about the style of cooking of yours. You like quickly make roti chapatis now. कितना बात Same यार कर आलतू बाबा, मैंने सिर्फ सुना है टोमेटो राइस मुझे भी खाना है, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ टोमेटो. अरे टोमेटो राइस को मारो गोली. Altu Baba बनाता है क्या बनाया था रे? पुलाव नहीं. गोंगुरा बिरयानी. नहीं. Oh wow. Ah, the one with that Nutella and all that. Yeah. Oh my God, it was to die for. It Yeah. was so good. They should have that. अरे खुल के रे. कि हम अपने अपने प्रांत का फूड बना के we should have something हम like लोग that. सोच you रहे know? हैं ना, दीपा, मैं ना मीडिया सोच में. नहीं दीपा दीपा. खुल गया रे, खुल गया. मतलब everything is open right now. शेल्टर इन प्लेस हो गया, खत्म हो मतलब गया. बाहर बैठ के हम लोग आराम से खा सकते हैं अभी. हाँ. अरे इतना भी इजी नहीं हुआ, कम ऑन. अच्छा दीपा, क्या by the way, कुछ भी क्या कुछ आज भी? बीडन आ गया, कल सब खत्म हो गया. बिडन नहीं बाइडन. क्या आप ना Whatever. पहला अपने दोस्त को बाइडन बोल दो, हाँ? बाद में बाइडन बोलो. बाइडन आया, देखो कितना गुस्सा देखो देखो. कितना बाइडन आया और वैक्सीन आ गया. बाइडन आया, हाँ, बाइडन आ गया, Come सभी on, को नहीं. फ्रीडम आ गया. ये ऐसे Place बाइडन आ place हो गया, रिपब्लिक डे आ गया. हाँ. Hey, but you know, I'll tell you one thing, Deepa. This is what I like about us. Though our political views are mismatched, right? Yes. Like, you know, we have a good view, you have a very that kind of view. But the point is, Yes. we still love we you. agree on one thing, which is food. No, we And agree on Indian one food. thing. We agree on one thing, Deepa. That is love. Love. We agree the fact Yes, that we love, love you, yes. we care for you, we want you to succeed. But of course, we want you to upgrade your Correct. taste about politics also. Yeah. Hey, जानकारी रखना बात है. Just hey, but she's got wonderful radio programming, Yeah, she and she's a great parent. Yeah. Deepa, I'm not kidding, Deepa. You can ask people. I have actually told people parenting करना तो Deepa से करो parenting. हाँ, exactly. Oh God. No, Thank you, Deepa, thank you, seriously, I'm not kidding. Your mother-in-law, ask her to talk to me. I'll tell her.
So she should be proud of you. What? They are children to wonderful radio program in the नहीं class. उतना दूर नहीं जाएंगे अभी. नहीं 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 actually नहीं माजी को दीपा बोलो मैं बात करूंगा. Don't worry यार. हाँ. हाँ. What is this? हाँ ये सभी मदर्स इन लॉ का फेवरेट हो जाता है. हाँ. हाँ. ओह Yeah, of अच्छा, course, अच्छा. because मैं हाँ तो तो जरूर मिलवाऊंगी ठीक है फिर. yeah. And by the way, I want to say one thing over here, Deepa. एक अच्छा प्रश्न आया मीनाक्षी का Facebook पे. एकलव्य का हमने बहुत सुना है. It has been more than 10 years. You are not able to train Faltu Rani yet. अरे don't talk about her, Pap. Don't patronize her. Hey! She's learning. Hey! अरे I believe in ट्रेन teaching. फालतू रानी for what? What? ट्रेन उनको किया जाता है नहीं नहीं जिनको फातिमा training तेरे की बारे में नहीं जरूरत है तेरे बारे में नहीं है फातिमा शी टॉकिंग अबाउट माय स्किल्स ऑफ ट्रेनिंग Now be quiet. चलेगा आई विल एक्सेप्ट इट माय स्टूडेंट दैट वे क्या करूं आई गॉट यू नो देखो दीपा की बहन है. दीपा क्या वो दीपा तुम्हारी बहन बोल रही है ऐसे दीपा. Hey, I was looking for संतरा but I got a lemon. What am I supposed to do? नहीं 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 आई थिंक शी इज टॉकिंग अस टू अंतु बाबा बार बार बोल रहा है ना मेरी शागिर्द है शी इज इन वर्क इन प्रोग्रेस तुमको बोल रहा है फाल्तू रानी वी आर विथ यू गाइस आई मीन वी आर विथ यू. She's also in the same class with you. I told them I'm not No, taking more no, students no. until I finish with you. हाँ. नहीं फाल्तू रानी बहुत सारा काम करती रहती है ना उसका सी वुमेन आर नोन फॉर Hey, मल्टीटास्किंग wait. वो सोच रही है अभी कौन सा गाना Oh my लगाएंगे God, फाल्तू रानी. and क्या She's saying क्या you're बात doing shopping करेंगे. and all multitasking it seems. What nonsense. Shopping is not multitasking. Be quiet. Yeah, multi windows you have open. She right? never said that. I was just sharing on Facebook. Yes. Yeah. Oh, she never whatever. said that. Okay, Tuna, fine. Deepa, fine. I told with you. I like that fact that you actually want to be supporting. Please, she requires all the support. Please give it to her. मैंने बता दिया ठीक है, बात. ठीक है. हाँ. तो अच्छा, अभी but मेरा फेवरेट गाना है हाँ, पेट्रियोटिक जहाँ डाल डाल पर लाइक ए, इट्स वेरी फर्स्ट patriotic नहीं है वो गाना. That is I. कैन प्ले प्लीज. Hey, I will play different for you, but that song is not patriotic. इट इज पेट्रियोटिक. No, it is just pride. Huh? Yeah. it नो is- नो इट्स व्हाट इज इंडिया की खासियत उसमें बोला गया है तो पेट्रियोटिक ओनली. Okay, according to you, what is patriotism? ठीक है मैं देखूंगी. दीपा तूने सही बोला. Don't worry about it. It is fine. right. It is national pride. Don't worry, Deepa. It's pride. Yeah. तू खामखा गुस्सा. Just trying to see if I can put a googly and she fell for it also. man. हाँ अंशु बाबा always tries to confuse me, you know. Yeah, today we want to talk about all songs that are about the desi pride. Pride. It's like Yes. Ma Tujhe Salam, No, not no, no. those songs. Not those songs, But no. songs that are about The greatness. Yeah. Awful mountains. The greatness. Well, like, you know, people. I want people to come and call up and that. You know, like how you said food. I love it. No wonder we speak the same language. Huh. But we still don't know your address, Yes. by the way, to come and eat. So it's okay. That's true, Deepa. Yes. Deepa, That's true. So are you stopping us नहीं from नहीं coming to your soon house? soon. क्या क्या सुन सुन? क्या soon? सुनना है? नहीं Smell. हाँ क्या था? बहुत कुछ- जल्द. क्या जल्द? बहुत क्या? जल्द मिलेंगे हाँ, हम लोग. देखो हम मिलेंगे जरूर यार ये मिलेंगे हम वो मिलेंगे लेकिन point is when is the question. Yup. Yes. How long can a man be hungry? Yeah. You know, drive जल्दी to- जल्दी मैं मैसेज भेजूंगी. No, don't worry. We're not forcing you and all, but doesn't matter. But definitely make sure you call us, okay? Yes. Thank you so much. Deepa, thank you so much. And if at all some other song, man, do give us a call here, 408-912-779. When you hang up the phone, you can go listen to the song which I'm playing for you specifically, okay? Huh. Thank you. Thank you, Deepa. And of course, Bachchan, what happened to you guys? Why aren't you calling us like how you called us? And here's a beautiful song Deepa requested. Yeah. National Pride. मातृभूमि मंगलवार. कुछ सीखो इस गाने से फातोनी. कुछ समझ में आया? फालतू बाबा. Actually, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा.
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। अल्तु बाबा, Yes. क्या आज भी ये सच है क्या? कि सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा? ऑफ कोर्स यस, लगता है क्या ये ढेरा। सच है ऑफ आज कोर्स भी? रास्ते के ढेरे रख पड़ा रहता है वहाँ पे, तो यूज नहीं करता है। कॉलिन मनुजान, we'd like to know, दीपा, क्या ये सच है? क्या ये सच है? अच्छा है Fatih, what talking about? Today is a day we're talking positive. We want. What? I want to know. You always want to controversialize things. Okay, Baljan, give us a call and tell us about this. 408-9179. ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। And of course, Baljan, अगर सोचते कौन से फिल्म में गाना है, this actually has आवाज for the movie सिकंदर आजम. कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हलबेले, That's so true. त्योहार है, अलबेले त्योहार है हमारे. Of Beautiful, course. beautiful festivals. All bell means all bell. Okay. And of course, Baljan, now we have 408-9179. कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। And a beautiful song, Baljan. It says our patriotic song आपको कहीं नहीं मिलेगा. और है हमारे पास Baljan, एक से बढ़कर एक गाने हैं हमारे पास जो आपको प्ले करेंगे जरूर. लेकिन आप भी थोड़ा call. Come on, let's see what you have to say. What is the thing which you're proud to have about your Mathrubhumi? Now, if your Mathrubhumi happens to be over here, so what? Give us a call. If it is about your Mathrubhumi, wherever it is, could be here, could be Pakistan, could be Sri Lanka, could be Nepal. Right, Falwani? Yup. Why not? सब चलता है बॉस. सब दौड़ता है. It doesn't matter because we don't discriminate. Yeah. देखिए जहाँ से भी आप हैं, you know, as long the beauty about the Desi, right? Desi is about countryman. It really doesn't matter that you have to be Indian alone. Yeah. Pakistani also can call themselves Desi. So can a Bangladeshi. So can somebody from Nepal also can call themselves Desi. And actually, Baljan, I'll tell you one thing. Initially, before India, I know what it was called. It was called Bharat. You know why Bharat means? Akhanda Bharat. What Bharat? Land of the sun.
Yeah. Actually speaking, around the world, sun rises. Yeah. Wherever sun is there, we are Bharat. So all of us are part of one world only. Yes. Oh my Madhujan. God, it's such a wonderful concept. Anyway, that number to call here is 4089122477. जो भी हमें Facebook पे देख के लुत्फ उठा रहे हैं, यहाँ पे कॉल करके बताइएगा 40891224. So actually, I'll tell you what, Deepa, you seem to be a person who's understanding my concept. She's saying also, let's bring a positive thing about. I know positive thing, but I'm asking you. I just asked you today. You said this is your desi pride. Jahan jahan dal par sone ki, and then you said jahan samsa aur dha pag pag lagta dhe, right? I'm just saying, in my lifetime or in lifetime, have you seen this? Is it true today? Yeah, to Have me, you it is. seen this happen? जहाँ सोने की चिड़िया हो, दाल दाल पे सोने की चिड़िया है. Hey, Father, now you are getting into literal things. Yeah, no. I'm You just- are trying to challenge people, just creating controversy. You are actually like 100% media personality right No, now. I'm not a media personality. You remind me of female Arnab Goswami. Faltu wants to know. रिपब्लिक डे पे ये रिपब्लिक बोल रही है, तो आप भी कॉल कीजिएगा, बोलेगा रे फालतू राने हैं? Acha, Anna ji, thank you very much for the blessing, and of course, आपने बोला कि you are enjoying art. We would love to talk to you also ना. We want to talk with you also ना. जो भी हमें सुन रहे हैं, क्यों रंजीत सिंह भाटिया साहब, आपको क्या सतीश जी और सतीश जी की बात था? हाँ, तुम लोग? Kavita, what is this? Give us a call, Kavita. Seriously. Call in 408-912-2479 and tell us right now, Badjan, what is your desi pride? Or are you ashamed to be a desi? I mean, I'm What? going to assume that if you don't call. Seriously, Same Badani. thing. Where is this Pranab ji, man? Well- Oh, where is the desi pride? Where's he of all the people I should be thinking would be touting desi No, pride? that's what you should be actually. Vishal inciting ji, them. where are they? All these Come on, people. let's incite them. Jyoti ji, उनके अंदर जोत जगाओ फालतू नहीं. Come on, let's do that. Jyoth जगाओ. मतलब जो हर फोरिशी का जोत जगाओ. हाँ, Call सभी, up here today. नहीं अभी सभी Americanized हो गए ना. हो why should we call? Somebody else will call and हाय, check. हाय, हाय. अदिति शेट्टी किधर हो? कॉल करो अरे जल्दी एक काम कर फादर, if you want to दीपक be पांड्या, जो पगड़ी पांड्या. तू सबका नाम लेती रही वहाँ पे, तो जब तक आप ये बदलाव तो शो खत्म हो जाएगा तब नहीं तक. नहीं तू लेती रहे ना, मैं तो गाना लगाता रहूंगा बीच में, तो लगाते रहना पे. क्या? And of course, Bhajan, one more nice song for you guys. आज का मातृभूमि मंगलवार पे. धरती वसदी इत्थे हर रुत हसदी हो गुरदास मान, प्रीति मजुमदार, उदित नारायण, लता मंगेशकर की आवाज में बन जाना सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वीर जरा. है मेरा देश है लिरिक्स मेरा. बाय जावेद अख्तर साहब बदजन, Mohan, right? Music. late Madan Mohan ji. It's one of the songs by him and recreated by Sanjeev Kohli. धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर आए, ऐसा देश है या मेरा. बलजान, ऐसा ही देश है हमारा बलजान. आज है मातृभूमि मंगलवार. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के मातृभूमि सेलिब्रेशन में. वेलकम, हैप्पी रिपब्लिक डे. हुज दिस? जय हिंद. वाह वाह, वेरी गुड. ये गाना देखो आप, जैसे तो ललकारा फालतू नहीं आगे ना पे. Exactly. हाँ, भाटे साहब बताइए. हाँ, तो बताइए सर. जय हिंद हाँ तो जी. लास्ट में. हाँ, वंदे मातरम. वंदे मातरम, सेम वंदे डिफरेंस. मातरम. अरे सेम डिफरेंस. हाँ. हाँ बोलो सर, आपका कोई आज के टॉपिक के बारे में. व्हाट इज द थिंग मेक्स यू प्राउड ऑफ आवर नेशन? अब नेशन प्राउड ये है कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम शुद्ध देसी हैं. सो स्वीट. नहीं, एक मिनट. आप घी थोड़ा ना हो, शुद्ध देसी हो. फालतू नहीं. आप ये बताओ. बहुत भटका रही है लोगों को आज नहीं, का. नहीं, आज बस क्या हुआ तेरे को पूछ- फालतू? अब मैं पूछ रही हूँ, मतलब क्या बताओ रंजीत सिंह भाटे साहब कि क्या बोल रहे हो आप? व्हाट डू यू मीन बाय शुद्ध देसी हैं? शुद्ध देसी मीन्स खान पान, रहन सहन और लोगों को अपने रंग में रंगने वाले. हाँ, रेडियो हाय, सुनने हाय. वाले. रेडियो सुनने वाले. हाँ, रेडियो भी रेडियो बिल्कुल. पार्ट ऑफ अ कल्चर है. व्हाट बिल्कुल. हाँ, थैंक यू सर.
अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि हमारा दैट्स योर देसी प्राइड दैट यू हैव बीन एबल टू रिटेन दैट सो मच ऑफ दैट कल्चर इवन Yes. हियर इन दिस लैंड. जिंदा रखते हैं ना, कोई भी माध्यम हो, Yeah, जैसे अपनी भाषा हो, अपना खान पान, agreed, sir. Totally. रेडियो हो. Yeah. हाँ, Sir, to agree with you on this particular concept. I agree with you. We stay close. करेक्ट. The more far we go. हाँ, मैंने सुना है भाटी साहब कि लोग जब इंडिया छोड़ते हैं, राइट, जब निकल जाते हैं किसी और देश के लिए, उनके दिमाग इंडिया का पिक्चर रह जाता है, राइट, एक स्नैपशॉट. Photograph. वो फ्रीज हो जाता है उनके लिए जब वो वहाँ से निकलते हैं कि आगे से उनको कोई ये नहीं रहता. मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग वाज एज ऑफ व्हेन दे लेफ्ट इंडिया. तो बाकी वापस बहुत साल बाद जाते हैं तो उनको कल्चर शॉक हो जाता है कि इतना डिफरेंट हो गया सब कुछ. हाँ, कहने का मतलब क्या तेरा? बस ऐसे ही. वाह वाह, बिना पॉइंट का मुझे बात बता दी. अरे मैंने ये बताया कि लोग उस कल्चर को इतना मानते हैं कि जैसे रंजीत सिंह भाटिया साहब ने कहा ना, यहाँ पे भी हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं. ऐसे कहा जाता है कि जो बाहर निकल जाते हैं इंडिया से वो ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करते हैं द पीपल हु आर बैक होम इन इंडिया. Is that a Is that question? true? Is it true? पूछ रही है. Yes. हाँ बोल दिया उन्होंने. हाँ, देखो. वाह, फालतू Very नहीं. good. वेरी गुड. इतना लंबा क्वेश्चन पूछ के बस आंसर, वन वर्ड आंसर है. यस, हाँ या ना. उनको बात करके मौका दो यार, फालतू नहीं. तो आपका टिप सर? मेरी टिप्पणी यही है कि बस हमेशा अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहिए, अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाना चाहिए, अपना खान पान सिखाना चाहिए, ताकि वो अपनी विरासत में जो मिला है उसको भूल ना जाए. वाह, भूल न जाना तुम. वो अलग बात है. सॉरी, दैट्स रॉन्ग सॉन्ग और एक्चुअली. बाकी जैसे फालतू रामी ने बोला है कि भाई क्या क्या मैं भूल गया. हाँ ना, डोंट वरी, काफी सारे लोग भूल गए. तो क्या बोली फालतू नहीं? नहीं, तो बहुत थोड़ा लंबा बोली इसलिए. रहने. तो संक्षिप्त में बताओ ना. संक्षिप्त में बात स्मॉल नहीं. किस प्रिंसिपल कीप इट कोई शॉर्ट. बात नहीं, कोई बात नहीं. ओह माय गॉड, फालतू नहीं. कम ऑन, ये रंजीत भाटिया साहब है, क्यों बुरा मानती है यार? मैं रंजीत भाटिया साहब के बारे में नहीं बुरा मान रही हूँ. तू है ना, बस काफी है माय तू. गॉड. एनीवे सर, डोंट वरी, मैं आपके लिए शील्ड बनूंगा. हाँ, नहीं, आप बोल रहे थे ना, मैंने जो बात किया वो द स्नैपशॉट जो फ्रीज हो गए या हाँ. दैट्स राइट. Yeah. क्योंकि हम लोग काफी लेट आए ना यहाँ पर. जो बच्चे पैदा हुए या बहुत छोटे हैं, उनको तो कुछ याद नहीं है, तो हम लोगों को सारा कुछ याद है, तो अक्सर दिमाग वहीं चला जाता है. हाँ, यादें में जैसे फ्लैशबैक चलता है, स्टोरी चलती रहती है. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू. करेक्ट, वो करेक्ट. जो फालतू रान ने बोला था ना कि फ्रीज हो जाते हैं, वो बात बिल्कुल सही है. So Faltani, is it good that we actually have that thing? Is it something you're proud of, Faltani? क्या? That particular trait of ours to keep it frozen in our mind? I don't know about that trait. I'm just talking about the fact that we think enough of our land and our culture that we freeze it. Wow, so sweet. In You our cherish it. heads. We cherish it. So yeah. sweet, Faltani. We That's cherish very that. nice. Wonderful, sir. Sir, I think that's what even Ranjit Singh Bhatia साहब. Yeah, he exactly. does. Yeah. तो रंजीत साहब, आप बताइए, आपका कोई फेवरेट गाना है जो हम आज पेश करें जो पेट्रियोटिक हो? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का. वाह, वंडरफुल सर. Very nice. इस देश का क्या कहना, right? Uh-huh. That song. Yeah. Dilip Kumar and Ajit. Very nice. Very Very nice. good. Well, definitely played for you, sir. सुनते रहिएगा for sure, all right? And happy Republic Day to you. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर नाइस प्रोग्राम. Thank you, sir. Thank you. सुनते रहिएगा. Thank you so much. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है बैम बैम में. हैप्पी रिपब्लिक डे. कौन है जी? हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस जी. मैं राजवीर संधू बोल रहा हूँ. संधू साहब. कैसे हैं सर? मैं बढ़िया बढ़िया. आप सुनाए कैसे हैं जी? Wonderful, sir. Thank you for calling the show today, sir. हाँ जी. मैं फ्रीमौंट से बोल रहा हूँ जी. Very तो good. आप फर्स्ट टाइम कॉलर है ना हमारे? नहीं, मैंने एक बार पहले भी किया था. काफी टाइम हो गया. आपको भूल सुनता तो जाती है, काफी मेरे को ज्यादा याद हूँ, है. लेकिन हाँ, मैं कॉल नहीं इतना करता. सर सालू साहब, मुझे याद है. इसको बात नहीं है. छोड़ो. साल हो गए. तो साल में भूलता नहीं हूँ बाबा. हमारे यहाँ मेरा एक रात गई बात गई छी टाइम. छी कैसे. सॉरी सालू साहब, इसके लिए मैं माफी करता हूँ. मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेन नहीं हो रही. क्या करूँ मैं? तू ट्रेन में कोई कभी कभार कैसा चैलेंज मिल जाती है ना. ये जब स्टूडेंट्स मिलते तो यू कांट चूज द स्टूडेंट. ऊपर वाला दे देता हूँ, बस उतना ही, कुछ नहीं. अच्छा तू ले. मतलब स्टूडेंट्स को देता हूँ यार. तुम्हें क्या आदत देखता है सानू साहब. बट थैंक यू सो मच कॉलिंग अस. हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू. आपका कोई इसके टिप्पणी विशेष? मतलब व्हाट यू आपका- प्राउड? हाँ, सॉरी. या डेफिनेटली आई एम प्राउड टू बी इंडियन. यू नो, मैं भारतीय होने के नाते बहुत ज्यादा अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ. इस Wonderful. देश में आए हुए 10-15 साल हो गए. Wonderful. Still deep down, you know, like you say, like you can get
Indian out of India, but you can't get India out of an Indian, you know. So Beautiful. अंदर से मैं अभी उतना ही भारतीय हूँ जितना 20 साल पहले था. That is wonderful, and that's one of the things what Falguni talked about too, about the fact that we still keep it close to our heart, right? Yeah, and Yes. कोई ऐसी खास बात इंडिया के बारे में या इंडियंस के बारे में जो आपको बहुत भाता है? Indian, in spite of the thing, you know, that we are culturally, religiously, or we come from so many different backgrounds. हाँ. But in spite of all the differences, in spite of all the things, you know, deep down at core, we are an Indian, you know. Beautiful. And I am proud to be Indian. I know, I'm sorry, you know, I don't want to, like, maybe you don't want to talk about this thing. I just want to say this thing, you know. Being an Indian and being a Sikh and being a farmer, my family comes from farmer. I'm deeply sorry for what happened yesterday. You know? Yep. Really, everybody feels so deep down. I'm not telling you like this, like, down after all my friends, everything, we did support the farmers and we do support the farmers, but we are not part of what happened yesterday. We are deeply, deeply, deeply sorry about that. But And- still, I'm proud of Indian. I know deep down you feel the same thing, but you didn't want to talk about this. We have to address the 900-pound gorilla in the room. That's well said. Very, Very well well said, sir, and thank you so much for voicing that, because I think at the end of the day, that is so important to note that violence is the answer, and you know, there are miscreants everywhere, but at the same time, you know, we're all together, and this is one land, and it's one people. We're all one people, and that's so beautifully put. Thank you so much for clarifying that, because you know, there's a lot of angst about those things, and it's definitely left a mark, especially with the Republic Day celebrations that happened yesterday. But at the end of the day, you know, this is something different, and how to go about you know, achieving a particular cause or something has to always be through a collaboration and love. It cannot be violence. एक चीज बताऊंगा, ये मेरे हिसाब से ना एक चीज है हमारे देशी लोगों का जो I feel is a wonderful thing, right? Yeah, We have this thing of coming together in solidarity, Yeah. And we heal together. एक चीज जो है innate हो गया हमारे में. हाँ, कभी कभार ये दंगे फसाद होते रहते हैं, yes, but we all know Yeah. we'll come together. We'll come together in peace, and I think majority of us believe in peace. Yeah. Majority believe in peace. Definitely, Yes. definitely. Differences is in everywhere, you know, but जैसे वो हिंदी में बोलते हैं कि शरारती तत्व, majority of the people was peaceful yesterday too, you know. Yes. They were following it, but those few people who are bound to create, you know, bound Yeah. to create the, Correct. जैसे कहते हैं दाल में कंकड़ जब आ जाता है, इतनी अच्छी दाल बनी होती है, जो कंकड़ आ जाता है ना, हाँ तो जी, सारा. हाँ But जी. anyway, you know, I feel proud. जब मैं 15 साल का था, जब मैं 10 साल का था, जब स्कूल में प्रेयर होती थी, जब जनगण मन जब गाते थे, तब जो मुझे फीलिंग आती थी, आज भी जब मैं जनगण मन सुनता हूँ, वही मुझे फीलिंग आती है, वही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. Exactly. And anyway, जय हिंद. सर बिफोर यू गो, मुझे आपसे कुछ करना, रोंगटे खड़े होने की बात की, लेकिन मुझे एक चीज हुआ अभी 2 सेकंड पहले मेरे रोंगटे खड़े हुए, बिकॉज I'll tell you one thing which I want to be very proud of, Falguni. Yeah. हमारे कल्चर में विजडम है. आप जैसे लोग हैं जो हमें विजडम सिखाते हैं to take things in a positive way and correct ourselves and go further. That's what I want to thank you for doing that. Thank you And- for voicing us today, sir. Yeah, and I really want to commend you, sir. Thank you so much Yeah. for calling in, because we know how passionately a lot of our Sikh brothers and sisters have been supporting the farmers movement, and it takes a lot of courage and gumption. You know, people, when something goes wrong, people automatically become silent. They don't say anything. Call and say this. That requires a lot of character, and thank you so much for doing the right thing. And you, I mean, it's amazing. Thank you so much for that, and we are proud that we have bandhus like you. Correct. So thank you so much. You're welcome, ma'am. You have wonderful day, you know. And again, गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो आप. Thank जय you, हिंद. sir. Thank you, so sir. Thank you so much. And Banjan, right now we're going to go into a break. कहीं पे मत जाइएगा. We'll come to more fun songs for you guys and discussions which you want to call us and give us a call or share with us. 408-912-2479. जारी रखते हैं ये सागा ऑफ मातृभूमि मंगलवार.
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे। You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम। बोलो 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 पैम पैम, an evening with पैम पैम। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम। बोलो 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 पैम पैम, an evening with पैम पैम। रेडियो का टाइप तुम घुमा लो, हर चीज को तुम आजमा लो, दिन भर की टेंशन भुला दो, जी भर के हंसना हंसा। रेडियो के डल तुम घुमा लो, हर चीज को तुम आजमा लो, दिन भर की टेंशन भुला दो, जी भर के हंस लो हंसा। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा। अब तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम। बोलो 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 पैम पैम, an evening with पैम। सीने से हमको लगा लो, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लो, ट्रैफिक ये सर पे चढ़ी है, बिहारीज का। You are listening to Radio D Hottie, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D. The content broadcast on this show is meant for information and entertainment purposes only. Radio D Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations. Proudly presents Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! You heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! Bye-bye. नमस्कार Namaste. नमस्कार Vanakkam. खुशामदीद Assalamu alaikum. सत श्री अकाल Andariki vandanamu. जय स्वामीनारायण Jai Shri Krishna. जय जनेन्द्र Albabandu bolte yalmadar. बोला नहीं बोलते हुए सारे फीजी बंदर बोलेगा नहीं साहब बोला बटन हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं सिर्फ And of course, myself, Faltu, लेकर आपके लिए एक और drive time show that's going to make it totally exciting and totally mastani Baddajan. And then I'll tell you कि आज का मातृभूमि मंगलवार is very timely because this is the time we actually have to celebrate republicness. Eh? Yes. Republic Nessa.
are they Indianness? Hey, same difference. Desiness. See, I'll tell you, Badhujan, if at all we were not, देखो, age-wise, we always had what? What? Multiple rulers, Okay. right? But we came together, Huh. right? Solidarity. Huh. At the time of difficult times, we came together. I was really touched by the caller who just called us before, Sandhu Saab. Thank you so much. He मेरे सच्ची में रोंगटे खड़े हुए जब वो बात कर रहे थे इसके बारे में, and I really feel the same way. Came together, right? Don't want to tell you, Fatwani, What? that nobody can rule us. We are unruly. No, sorry. I meant to say. Good one, actually. Well, comedy में सथर मारना कोई मेरे से क्या? लेकिन तू सीखती नहीं मेरे से. तूने कुछ भी ऐसे ही मतलब तुक्का मारा, it just stuck. That's कुछ all. भी What nonsense. What? कुछ random ही था. हाँ हाँ फालतूनी हाँ. भले मैं स्क्रिप्ट ना लिखूं फालतूनी, लेकिन मेरे दिमाग में जो भी आता है, it just comes out of तुम बक दे. love. Uh-huh. My God, how mean फालतूनी यार. Well, anyway, Badhujan, दीपा today- जी, thank you so much for the wonderful blessings. What did she say? Yes, क्या तेरे को नहीं, तेरे को already blessing आ गया, आनंद जी ने बोला, तो don't worry about it. ओए वो मैं स्नीज कर रही थी इसीलिए आनंद जी ने बोला ब्लेस यू फालतू रानी. Okie dokie. thank you, Deepa. Well, Faltran, let me tell you one thing. आज मातृभूमि मंगलवार में आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉल करो, बताओ what is the thing you're proud to be Desi? What makes you proud? संधू साहब आपके लिए बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स एंड आपके कमेंट के लिए बहुत सारे हार्ट्स और लाइक्स आए जब हम फेसबुक पे उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. अगर आप जाके देखना चाहते हैं प्लीज facebook.com/Radio Day Hotties and look it up over there. Yes, Pandujan. So, Faltani, I'll हाँ, tell you one thing. हाँ. November 2nd, actually, people who are born that date are wonderful people who actually have pride. एक को गाना लगाओ. तू ना आलतू बाबा हर एक चीज में November 2nd. Oh my God, the whole world revolves around you. That's what it is. I was watching this whole interview of Shah Rukh Khan also. Oh my God, seriously. Seriously, what? What? I could find a lot of parallels. No, there's no parallel because So he's got full money. of themselves, and at the same time, like so smug. Oh my God, What so sm- smug. what? Smug in your own conceit. Please. Lord. नमस्कार, आप कहाँ से हो? पान पान मैं सुन नहीं सकते सब कुछ. आप कौन है? हेलो. Hey, Pam Pam. मीनाक्षी Happy जी. Republic Day. Thank you. Happy Republic Day to Happy you Republic Day too. to you. मीनाक्षी, क्या आप और दीपा बात कर लेते हैं कि हाँ फर्स्ट आवर मैं कॉल करती हूँ, सेकंड आवर में तू कॉल करना. कोई ऐसा अनसेट रूल है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने सुना कि आलतू बाबा पुराण शुरू हो गया है तो मैंने सोचा मैं आप कॉल कर देती हूँ. Very good. Thank you. फालतू रानी को Thank थोड़ा you. टॉर्चर से बचा लेती हूँ. Oh my God. Thank you. खुश तो बहुत होगी तो पता नहीं. और बहुत हूँ मैं. Thank you मीनाक्षी जी. Thank you बट very मीनाक्षी much. जी अच्छा हुआ आप आए क्योंकि मुझे भी थोड़ा अच्छी बातें करने का ये आएगा, मोहब्बत आएगा. सो इट्स गुड. तो बताइए ना आपके हिसाब से व्हाट इज द थिंग यू आर प्राउड टू बी देसी अबाउट? मुझे अपने देश की एक ही चीज अच्छी लगती है जो हमारा मूलभूत आधार है हमारे देश का, वो है अनेकता में एकता. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वाओ, आई लाइक द वे शी यूज्ड द वर्ड मूलभूत आधार. Oh goodness. वाह, आपको क्योंकि हमारा आजादी के बाद से सबसे पहला ही मूलभूत जो होते हैं ना कुछ मौलिक चीजें डिसाइड करी जाती हैं तो उसमें सबसे पहले यही था कि अनेकता में एकता है. हाँ, ये एक्चुअली फेमस गाना है जो फादर भी गाएगा आपके लिए. हाँ. वो दिमाग में आ गया. कौन सा वाला बोला? एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुभने आई चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया. ये हमारे दिमाग में ऐसे इंग्लिश कर दिया उन्होंने. एक अनेक गिलहरिया. दीदी आगे क्या हुआ बताओ दीदी. Oh, that is such a cute. Oh my God, that was like what? दूरदर्शन का था ना? लेकिन फादर she's talking about independence time से हम बता रहे हैं. हाँ. Hey, but one thing is that ये जो concept of एकता अनेकता and all right, it's very true. हमारे culture में moral stories जो होती है ना, हाँ. वो सब दिखाते हैं ना. They talk about that, right? No? क्योंकि इसी उस पर थी. हाँ. अंग्रेजों का रूल था डिवाइड एंड रूल. Yeah. हाँ. और उसे जीता कैसे गया? अनेकता में एकता से. हाँ. एक साथ एकजुट होकर ही तो आजादी पाई गई. हाँ. Correct. You're right. Yeah. I agree with you. लेकिन आपसे वो पूछ कि ये जो अनेकता में एकता हम लोग कह रहे हैं ये आज भी ये कायम होता है? कायम. हाँ नहीं. क्यों? बट सैडली आई हैव टू से कि शायद हम आगे
बढ़ रहे हैं, एज अ इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, हाँ लेकिन जो हमारी बेसिक चीजें हैं वो कहीं धूमिल होती जा रही हैं। हाँ हाँ हाँ, वो हमें तो करना चाहिए हमें ये विरासत दी गई है, तो हमें आने वाली जनरेशन को यही चीजें आगे विरासत में देनी है। हाँ तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कि इन चीजों को भूले नहीं। Very कोई good. भी धर्म, जाति, कोई भी देश की एकता से बड़ा नहीं है। जब देश Exactly. की एकता की बात आएगी, ना धर्म आएगा ना जाति आएगी, ये बहुत पीछे रह जाते हैं। Exactly. तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे से मनमुटाव करना, इवन नया चला हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब छोड़ के पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, अगर फिर कुछ बच सके तो एक अच्छे देश के नागरिक बन जाओ। धर्म जाति बहुत पीछे है। You know, I want to ask you one thing, Meenakshi ji, because I know that you will actually think about these lines. मुझे लगता है कि हमें आज़ादी जब मिली ना, हाँ we started believing in the concept of spirituality. The more we're stepping away from it is when we actually finding all the troubles. Like, you know, if we never got the concept of coming, like, you know, anekta mein ekta, like, you know, finding that all of us coming together as one, yeah right? Now suddenly it's become like ekta, anekta. Like, you know, they're trying to differentiate between themselves again nowadays. Yeah. That's the sad part about the whole thing. Yeah. So in other words, being spiritual is what is affecting our culture, which initially was on the basis of spirituality, correct which was all about the fact of understanding what is oneness. yeah Right? Yeah. Hindu culture ho, Buddhism culture ho, or any of those particular religions which will promote spirituality. Right? What do you feel? हम इसे ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर हम हमारे सबके घरों में हम एक हाउस रूल बनाते हैं कि चाहे हम साथ में डिनर करने वाले हैं या कुछ भी है, तो हम उस हाउस रूल को कायम रखते हैं इसलिए कि एटलीस्ट उस वक्त तो हम सब बैठ के एक साथ बातें कर सकें। यही देश के साथ जाता है। ये बेसिक रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं हमारे देश के, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। right Very true. I think Right. tradition is something which we have to keep it going. हाँ Yeah. And wonderful. Thank you. Oh my God. फाल्तू ने देखा कितना अच्छी बोली हमारी मीनाक्षी जी ने. हाँ बिल्कुल 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 वेरी नाइस एंड इसीलिए मैंने मीनाक्षी जी से ये सवाल किया। So sweet. फाल्तू के पास कुछ है शेयर करने के लिए, बताओ फाल्तू ने क्या क्या बोली? शेयर करूँ? कुछ तो शेयर करने वाली थी ना? मुझे मालूम है अंदर में see फाल्तू नहीं, I've seen, I know नहीं everything मैं about you. ये कहने वाली थी हाँ कि बताओ मुझे मालूम था. हाँ. नहीं ये कहने वाली थी कि what happens, see the reason we decided to do Desi Pride also मीनाक्षी जी कि जो इंडिया से बाहर निकल जाते हैं काफ़ी इंडियंस या जो सीज हैं वो उनमें एक किस्म का सिनिसिज्म भर जाता है कि वो मैंने हाल ही में एक आध क्या कि मूवीज़ या OTT फीचर्स देखा, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि खामखा वो पॉपुलर कराऊंगी उनको सो उसमें ऐसे दिखाते हैं इवन इंक्लूडिंग मूवीज ऑफ मीरा नायर, व्हाट इज दैट मैन मिसेस नो व्हाट इज दैट मैं ऐसे फिल्म देखा नहीं फाल्तू ने. Salam Bombay and all that. It shows India in such a negative light to the world. In fact, I went to my chiropractor yesterday, and then she actually told me about the series. I only watched the series because she told me, and she said, "Is it true that in India there is there is a servant class like the slaves, and there is a master class?" And this is the understanding that people have when they watch these kind of movies or they watch this, I'm the very so-called interested pop culture. to know what was the response which you gave her. Well, I asked her, what are you talking about? I said, there's no slavery in India. Then she says, no. Is it true that, the masters sleep in huge quarters and the servants sleep in the garage? Is it true? Does that happen? So you said you don't know? Well, I didn't tell her I don't know. I said it is about, and she said, is it true that people are of a, there's still the caste system. It's about economically disadvantaged people. Yes, there is a very big divide in India today between the ones who have the haves and the have-nots. There is still that divide. Yeah. And I said, and there is a burgeoning middle class in between, but at the same time, there is that oppression of people who don't have
by the people who have. It is there, and I said that's there even in Open America. of haves and have-nots, Yeah, which it is happens here. everywhere. Yeah, it happens everywhere. That's what I told her. I said it's not in America. Maybe it's not as evident because not as many people are struggling to even make a wage. Yeah. At least the government takes care of it. In India, we have no such thing called social Yeah, security and degree all of that. implementation of these things will be different, but Yeah. it is everywhere. Yeah. So that's what really bothered me when I was listening to that. And then I said, why is it that people have this, image of India that, agar aap Dalit ho, agar aap wo ho, to aise ho. Why do we still, in today's day and age, talk about all those kinds of things? I mean, I cannot believe that we are still in a world. That's why I wanted to focus on positive things, Fatani, Yes. but somehow we always bring it into the pot of negative. I don't know why. No. So I was saying this anekta mein ekta, right? Yeah. Has to be followed by. It has to be taught. I don't know if they still teach Hey, it. It was but- taught in my school. But I'll tell you one thing, Fatani and Meenakshi ji, Indians in India, they definitely follow Ekta. I'm telling you seriously. Ekta. Ekta Kapoor. Ekta Kapoor ke serials, no. Unfortunately, yes, that's what they follow. They should not follow. It's the most misleading kind of concepts of Really? Indian Really? culture. Yeah. नहीं वो तो कुछ misconceptions ही फैलाएंगे Correct. तो Yes. ना ही देखे उन्हें तो Yeah, अच्छा है। exactly. Like, so, the especially the dynamics of a home. Huh. I can't imagine the way they talk about Saas Bahu, right? The dynamics. Huh. It's like everybody's out to kill each other. That's what it is all about. Yeah. Anyways, And that's then fine. if somebody dies, they'll come back as a snake. Or they'll become a lesbian afterwards. Anyway, so Meenakshi, thank you so much. लेकिन जाने से पहले आप एक गाना बताओ जो आपको लगता है कि this is actually like my patriotic song. पता नहीं जो आप दोनों का फेवरेट गाना हो वो लगा नहीं आपका गाना लगाएंगे यार बताओ नहीं आप दोनों का जो फेवरेट हो क्योंकि मुझे तो सब पसंद है हाँ जो आप लगा दोगे वो अच्छा है मुझे सब पसंद है हाँ। वेरी गुड लेकिन डोंट वरी स्पेशल गाना लगाऊंगा नवंबर 2 बॉर्न वाले का ही आई डोंट सी एनीथिंग आपका सलमान खान कुछ नहीं है मेरे पास दिसंबर का तो मैं तो कह भी नहीं रही सलमान खान का लगाओ सलमान खान का कोई देशभक्ति के लिए सलमान खान जरूरी नहीं है अरे वाह सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर सुनते रहिएगा गॉट अ वंडरफुल सॉन्ग लैंड अप फॉर यू गाइस ओके राइट थैंक यू सो Have a मच good one. थैंक Bye-bye. यू You too. And next, go to Mohammed Waiting Line. नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के मातृभूमि मंगलवार में. Who's this? Hello. Hello, Pam Pam. This is Tanushree. তনুশ্রী জি কেমন আছেন ভালো খুব ভালো আপনারা কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো ভালো চা খাবে চা তো খাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু ওয়েট করছি যখন সব করোনা ঠিক হয়ে যাবে আপনাদের সাথে এসেও চা খাবো ওটা কখনো দ্যাট ইজ অলওয়েজ আ স্ট্যান্ডিং আইটেম Oh, same to you. স্ট্যান্ডিং আইটেম yes thank you same to here you. same here Yes. Same I'll never here. forget the chochori you brought us. अच्छा Oh, how sweet. I totally forgot. How नहीं nice नहीं of ये you to remember. आपका ये आपका बड़प्पन ही करके आप भूल जाते we हो. actually talk to everybody else also Yes, we it's a point of inspiration, especially person sitting in Mountain House. yeah Hey, but really, seriously, that's one thing. I really want to know, Tanushri, what is your thing? What is the thing which makes you proud to be of Indian origin? Actually, there were so many things when I read it. It's like I really commend you. It's commendable. It's raining outside. It's windy, and people are trying to get home. And here you are bringing this amazing program to all of us. So thank you, first of all, to you. And the thing there are so many things. It's how pinpoint one thing that makes me proud to be an Indian. But when I was thinking how nice of you to do this program even today in Qatar. I thought of one thing that I would like to say is commitment and respect. I think that's something I want to talk about that makes me feel very proud an Indian. Because I think from the day I was born till now, I have never seen people, conveying the message of respect so well in any other place. I think we convey the way we can convey respect and to others, beautiful. I think to elders, to young people. I think I particularly like the way we convey our respect or pay our respect to our elders. And I think it brings a lot of piety to the whole thing. It brings a lot of discipline to anything. I think the arts, the science, I think whoever is pursuing something, if we learn how to respect
what we are doing. I think that's how you build in the discipline and, the routine or, the thoroughness into any kind of thing that you're following. So it makes me proud to be an Indian that we know how to pay our respect. And be with other people. Well, you bring up a very good, very important. It starts even in the way we greet people, right? Namaste, namahate. That I salute thee. That itself is such a huge. It stems from there, right? It starts that right from there. That your absolutely. And I have always felt that the meekness is kind of misunderstood as meekness or timidness. Yeah. That we bow and we say namaste, but it's absolutely the opposite. It's like I am not scared or I don't fear to be myself. I am myself and you yourself. I respect my space and you respect yours. And the concept of space, which we kind of totally misconstrue these days, that give me space and it becomes a struggle. Yeah. It's absolutely an unpleasant thing for both parties or whichever party is involved. But this has been going on for generations now, thousands and thousands of years, how to mark your space for yourself and for the other person who is right now, greeting you or you are with them. I think spiritually it's really, it has been guiding the world and I feel like it's impossible to express the words how the pride. I feel in a very good way. I'm not really boasting, but yeah, I think it's beautiful that we have been able to guide a lot of people spiritually, because that's the goal for everybody, isn't it? Very Indeed, true. indeed. And very well said, actually, Tanushree ji. I think I totally agree with you on this one, because I know that, like how you rightly said, it's considered to be meek or to be. It's a negative thing to have to be humble and have humility. That people, actually, humility is a superpower. Actually, to understand that to be able to understand what you can and what you cannot do and where you are. That is very important for you to move forward. And now modern world, I think the so-called life coaches are waking up and saying, oh, you got to lead with humility, blah, blah, blah. But, it's ingrained as a way, right? At home, it starts, right? You can't actually talk to elders. Yeah. All those things which we learnt. And I don't know how many of us actually followed right now, though. That's the point which we talked about, right? Yeah. How many of us actually are doing the thing which we learnt as kids? Yeah, exactly. Exactly. Many of us, we came out with, of course, we do try to instill it in our kids, but, obviously they're growing up in this culture. So it's a very, I think, a mindset of everyone as one, and that it's all about me. That is the big difference. I think you're absolutely right. The collectivist mindset we have in our culture, that the Hindu dharma or the Indian culture. When I say Hindu, please don't think it's religion. No. I'm talking about it's dharma. Yeah. So no, because the way of living is what we call we're it. talking about the way of living. Absolutely. Yeah, that is completely. In fact, it's a huge pride. You hit the nail on the head, because that is things that I was going to say, that Vasudhaiva Kutumbakam, right? That came from India. Absolutely, yeah. Even before the world could say anything about solidarity, we had that Vasudhaiva Kutumbakam is the world as one family. So and that indeed is an amazing thing that. It's a different mindset. Yep. It shows even now, right? Atithi Devo Bhava. This is all the things that stem from that, and it's historically we have seen how we have welcomed our guests, and of course we've suffered also because of that welcome. But we've never. I don't think that has affected the philosophy that we don't go and attack or or try to take over or anything. Exactly. I think it's been a guiding principle, and I'm really proud to come from a land which restores its traditions, its cultures, and yet it's not really trying to overcome somebody else's culture or somebody else's. Correct. That's amazing. I really can't express how proud I am.
Wonderful, wonderful. Thank you so much. It's so great to hear from you again after a long time. What happened, Tanushri ji? आपको आपसे हमारा नंबर खो गया था या रेडियो खो गया था? नहीं, number नहीं. Life happens, you know. But yeah, I'm totally there. I listen. I come, but sometimes it's like I don't know. I just वो था कि बात करना है वही एक्स्ट्रा. But आज तो ऐसा था. But you know, कहीं भी खड़े हो जाओ. इंडिया की बात हो रही है तो कहीं भी सामने जाके खड़े हो जाओ. Anything for India. Right. So, absolutely. Absolutely. Thank you for doing this. Yes, and thank you for braving the weather. Oh, no, sure. Oh my God, you won't believe it. I'm just really sitting in a studio which is closed in 4 ways. And heaters on, and we're just loving the coast and having the conversation with you guys. What we really love is you guys, man. Seriously. Yeah. And I think I'm proud of the fact that we have you around. Yes. Yeah. Rain or shine. We believe that the show has to go on. Yeah. So yes, I respect that. Again, this is totally commitment, respect. Aw, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Tanushri Hey, ji. her choice of song. Yes, please ask her. Yeah, what is your choice of song which you think was... It's Swadesh, ये जो देश है तेरा, that has been a very, I mean, of course there are again many, but the one, it just strikes the chord, the Shehnai, the full, I don't know, it's just goosebumps every time. Many times a lump in my throat, but yeah, that's the song I just came up with. When you asked, "Ye Jo Desh Hai Tera" from Swadesh. You're not going to believe that was a song that was lined up to play next. So, oh my goodness! Yeah. Okay. Well, salute to both of you and salutes to India. Jai Hind. Thank you. Thank Jai you. Hind. Jai Hind. Yeah, Yeah, Happy bye. Republic Day again. Thank Bye-bye. you. And of course, Vishal ji, we will have a different topic on that, probably a different show. We'll talk about the details as to Hinduism, religion, with the for sure. लेकिन ये गाना सुनिएगा and विशाल जी कॉल कीजिएगा for sure 4089 12279. Tell us what you're proud of, okay? A.R. रहमान की आवाज ये वो में बंधन है जो कभी टूट ही सकता मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा नई नई राहों में दबी दबी आहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा ये जो देश है तेरा जावेद अख्तर साहब के खूबसूरत बोल बदजान जिसको स्वरबद्ध किया है A.R. रहमान ने फ्रॉम द मूवी स्वदेश. Enjoy. Happy Republic Day to everybody celebrating. कभी टूट नहीं सकता तुझसे जिंदगी है ये कह रही सब तो पा लिया अब है क्या कमी यूं तो सारे सुख है बरसे पर दूर तू है अपने घर से आ लौट चल तू अब दीवाने जहाँ कोई तो तुझे अपना माने आवाज दे तुझे बुलाने वही देश ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता And आपका बच्चा नंबर to call you 4089 12279. मातृभाषा मंगलवार में आपका स्वागत है. Who's this? भूमि Oh, मंगलवार. sorry, मातृभूमि सेम डिफरेंस यार. नमस्कार, आपका हाथ स्वागत है. Who's this? नमस्कार पैम पैम. अरे पैम प्रणब जी, बहुत दिनों के बाद. Oh वाह. my अरे God. गंभीरता से पैम पैम अच्छा, आपके वॉइस को डिस्गाइज कर रहे हो क्या? ट्राई कर रहे थे. नहीं ये
वेदर ऐसा है ना, तो मौसम ऐसा, तो तापमान के साथ साथ आवाज भी थोड़ी सी। छोड़ा तापमान के देखा जाए तो आप तो ये मौसम आशिकाना आपके लिए। मौसम है मौसम तो मेरे लिए आशिकाना, ज्यादा ही आशिकाना होता है। तेरे 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 तोड़ा पकौड़ा बना के रखना। अरे पकोड़ा और नो पकोड़ा हाँ। आशिकी पर हमेशा होती है। ओए होए, हे भगवान। बहुत परिवर्तन आ गया अरे है। आशिक होने के लिए मौसम का सहारा आवश्यक नहीं है मेरे भाई। मुझे मालूम, आपके लिए तो डेफिनेटली नहीं यार। Yeah. तो बताइए सर, आज का मातृभूमि मंगलवार में व्हाट इज द थिंग प्राउड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन? Proud to be of Indian origin. ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ जैसे सबसे पहली बात तो है कि हम नियमों का बहुत पालन करते हैं। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, राइट? तो नियमों का पालन करते हैं। वी लॉ अबाइडिंग, वी फॉलो द रूल्स, रेस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड सेकंडली Really? there will, okay, I'm speaking for there will be some percentage जो गड़बड़ करते हैं, तो that is everywhere, not just for them, so उसको छोड़ दो। but in general the लोग आते हैं बाहर, they go worldwide and they make a name for themselves, so in what keeps them going and them in their success is ये बहुत बड़ी, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के नियम का पालन करते हैं, and they are hardworking and they are adaptable. They are peaceful. They can coexist with people. So you're So saying that okay, we want you to pick only one particular quality. So you're saying that okay, it's the people of India which you're proud of, correct? Yeah, of course, हाँ. of course. फालतू नहीं देखा, he's proud of me. Yes, yes. I am always proud of you, Altuala. That goes without saying. Ah. And you have not paid me anything to say that. I know, thank you. I don't have money also. पैसा नहीं है पे करने के लिए, वो हो तो डिफरेंट इशू है। But है भी नहीं। हाँ। अच्छा, मुझे एक टेक्स्ट भेज देना तुम लोगों का म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब खत्म होने के बाद। एडमिशन खत्म नहीं, नहीं तो मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। तुम लोगों ने एक क्वालिटी, वैसे तो बहुत सारी क्वालिटी, मेरे पास तो भंडार है क्वालिटी का। हाँ। बट ऐसे बोलोगे तो ऑफ कोर्स फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन इज डेफिनेटली देयर। एंड जो मैं अपने अनुभव की एडेप्टेबल, की जो यहाँ बंदा आता है, नॉट वांट टू साउंड टेकी, बट ऐसा है कि एक बंदा आता है, एक उसमें किसी में एक्सपर्ट होता है, बट जब वो यहाँ आता है उसको बोलते हैं ए कल तू जा रहे तेरे इंटरव्यू में, देयर इज समथिंग एल्स, वो घबराता नहीं है, वो रात भर उसका मैसेज पढ़ता है और नेक्स्ट डे जाके इंटरव्यू देता है। Flexibility, resourcefulness. Yeah. Resourceful and very adaptable. We don't Not get just that. Jugadus. Yeah, exactly. Jugadus. They Yes. will make sure So- that there will be somebody else who will be their expert, who will be sitting next to them and feeding them the answers. All that Jugadus. They'll find out always. हम bit copy करके मतलब एग्जाम पास करना हम लोगों का ही स्पेशल है। लेकिन आपके लिए मैंने एक मस्त गाना चूज किया, लेकिन आप बताओ आपका फेवरेट गाना कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जिसमें like there are different parts of life that touch, but अगर हम बात करें तो अच्छाई है, बुराई है, but you always think of what could be the best for your country. तो ऐसे तो एक गाना तुमने भी सुना है ये देश है मेरा, but I think that is in a different mood. but जो अगर देश की उसके लिए महानता की बात करोगे तो एक गाना जो पुराने जमाने का है, जहाँ डाल डाल के सोने की चिड़िया करती है बच्चे रहो भारत देश है मेरा, वो गाना मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो वो गाना ऑलरेडी लगा दिया हमने ऑलरेडी बात है, बट इनवे और भारतीयता की जब बात करोगे तो एक विषय कभी भी नहीं छूटना चाहिए, that binds us together, it is not Bollywood. हाँ, what binds us together? हाँ, बोलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूछते ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे very good question sir. Binds us together. Question sir. What binds Indians together across the globe? कहीं भी गया, वो कहीं वो न्यूजीलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, यूरोप में, अमेरिका में है, नाइजीरिया में, कहीं भी है, but there is one thing which always binds us together, keeps us close to. वाह, क्या है सर? And that is not Bollywood. That is not Bollywood. सर, और हमें अपने मुंह में मिठू नहीं करना चाहिए, रेडियो बोल देते हैं, लेकिन I don't want to. Okay, रेडियो डिहोटी के अलावा। सर आप बताओ सर। It's not that difficult. नहीं, I know it's not difficult, but I want to hear you say it. Yeah. देखा नहीं, हम तो ऑलवेज सर हम बताएंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे हम ही बोल रहे हैं, तो आप भी बताओ ना थोड़ा बहुत।
मैं प्रश्न करूं, मैं उसका उत्तर दूं, ऐसा कैसा हो सकता है? अरे होता है बाबा, कभी कभार टीचर करते हैं एनीवे, हेल्प फॉर द सेक ऑफ द एयर टाइम, हाँ आई डोंट वांट टू नहीं, बताइए। आई डोंट वांट टू ईट अरे, पाव, आई वांट टू ईट पाव। हाँ, तो जो वो उसका उत्तर है क्रिकेट। क्या कुछ भी Debatable, sir. random debatable Debatable. Take a poll online right away. Sir. Take a poll. अरे सर Other than नहीं Bollywood, सर what keeps us together as नहीं, Indians is cricket. नहीं नहीं, sir, what नहीं. keeps us together is a cricket match between India Pakistan. That I'll agree with you. नहीं, Not that is anything. part of course, that is the craze. But Sir, cricket in not general, all, definitely, not all. आज भी Okay, नहीं, साल बाद नहीं, भी। to each his own. I understand. तो आपका मैं राय लेता हूँ, but there are many people who actually are not big fans of the cricket game. yeah they don't know the काफी game सारे लोग हैं. हाँ. Because we know Yeah, this वो building शायद should- minority होंगे. Anyway, माइनॉरिटी तो क्या बात सर, डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में सबका दिल रखना पड़ता है. That's okay, Good. but- I'll agree with you. So but I have something that I want to share. I think another thing that binds us together is music. वाह. That's Music, yes, our music. that's true. Whereas Correct. it's a music that's whether Bollywood, whether it's Hindustani, whether it's Carnatic, whether it's folk, music that binds all of us together. All of us enjoy the music So, that comes from our land. Faltoni, I have a wonderful song for dedicated for Pranab ji. How about हाँ that? हाँ and cricket आपने बोल दिया yeah that's what Altu started with कि one of the biggest pride that it has today is how Rahane actually led India to victory Yeah. despite Yeah, everything going that recent memory. Yes, Yeah. Yeah. same. Of course. It Yeah. was historic. It became a historic thing, right? They beat Australia for Yeah, this, of course. मतलब you don't have even it's hard to find the 11 fit player. उसके Yeah. बाद भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देना उनके घर में. and That is amazing. and amidst racial slurring Yeah, the people yeah, throwing yeah. heckling and oh my god Yeah. that was like Amazing. it's that is Desi pride. That's Seriously, value, it's yeah. like Yeah, and also going there and finding out the administration is not proper. The booking, hotel booking also not there for them. yeah. All yeah. those things, but of course they push what it is. And ये गाना Exactly against all odds. हम लोग जुगाड़ू हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता है. Exactly, हाँ. we हम- fight every odd. हम टाको में जाके टाको बरीटो ऑर्डर करके रोटी खोल के आएंगे. मतलब रोटी और चना मसाला खाएंगे, मतलब व्हाटएवर अरे राजमा. हाँ. चाय में बिस्कुट डुबा के खाएंगे, किसी भी डिश में निचोड़ के खाएंगे, बट खाएंगे. हाँ सर, इसीलिए मैंने आपके लिए ये गाना स्पेसिफिकली चूज किया है. प्रणब जी, यू विल लव दिस सॉन्ग. आप फोन रखिए, गाना सुनिएगा, यू विल लव इट. Awesome. Thank you so much. Yes, thank you so much for calling in, Thank you. Pranab ji. Thank you. स्वस्थ रहो और स्वच्छ रखो. God bless you. हाँ, Thank क्लोरॉक्स you. यूज करो. क्लोरॉक्स, yeah. Okay, Wonderful. bye bye. Thank you so much, sir. And of course, Pranab ji, आपके लिए एक गाना पेश करूंगा. Which I believe this गाना फालतूनी. Wait, Altu Baba, Yeah. tell them the history behind this Gana, our shows. With that our media shows. Mahima So created. we were the first people. Mahima ji was the first person who actually comes out of radio, entertainment radio here in the Bay Area. But then people can argue till they're blue. Huh. But I know the fact. We know the fact, and there's proof of it also. Yeah. People start off entertainment radio here in the Bay Area almost 11 years ago was us. When I say us, let me not This take is credit the for it. 12th year. It was Mahima ji who actually came with the concept and said, okay, you know what, we got to do this, and we bought into the idea. The thing is, we started off the radio show called Bay Area Buck Buck, and what she told out there was, she said, when we Desi, if it's going to be Desi program, it has to have all elements of Desi. Inclusivity was her message. Yeah. And she said diversity, unity in diversity is what we are. And luckily for us, Mahima ji, hers was a linguist, she can speak 9 languages. So our Beria Buck Buck that you listen to, अभी जो आप सुनते हो Saturdays 5 to 7 को बंदजान, ये अभी हिंदी में है. Definitely, that's the unifying thread because most people understand Hindi. But the show originally when we began, if anybody called us, if it was somebody from Any Tamil part of Nadu, India. any part of India, we would speak to them in their tongue. Yeah, so if and they we use music to their palate. if you the theme of love or whatever, you know, different kinds of themes, but every one of she would have songs that would go with those themes, and that was the beauty of Bay Area Buck Buck Banja, and that has been the beauty of Radio D Hotties and Media Mahima radio programming, because we believe that it really doesn't matter what language you speak, because at the end of the day we all speak the language of love. Yeah, well, whether you speak a certain language, eat a certain kind of food, whatever it is, right? She used to always say, at the end of the day, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. and of course, but this Gana, I'm dedicating it for our Pranab ji right now. Fir bhi dil hai Hindustani. It's very true. We are Jigadus. And samajh sako to? हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी,
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। So true ना मधुजान, हम this is लोगों what we do को every day. समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। The land of paradoxes, Mudhujan. That's what this whole song is about. Yep, it is. And tolerance to ambiguity. थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और पैसे भी, हम ऐसे हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, सीधी जैसी भी है। Yes, मधुजान उल्टी सीधी कैसे भी है अपनी ये कहानी। And of course, yes, अगर आप सोचे कौन से फिल्म का गाना है, the movie name itself is फिर भी दिल हिंदुस्तानी, right? Yeah. Yeah, it's very nice. We haven't seen it. Go see it for sure. But that actually is about. Well, actually, it's so true, right? We do live double standards. Exactly. कि Hey. बारिश हो रही है, किसी को छतरी पकड़ा देंगे, अपना खुद का छतरी Hey. नई चीज में एक और चीज बात पुरानी नई पैकेट में। People saying this. हाँ. We are the people who will do something and say something else. Double. As in, when I say that, hypocritical to the core, we will actually tell people, oh, yes, ऐसा कर, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करते। हाँ, exactly. ये भी हम में है। हाँ, अपने बच्चों को बोलेंगे, हे, बात कर रही हो, But we'll do it. You got to do it. But we would do the same thing back to our parents. Exactly. आंसू हैं कुछ ने हैं और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। That is not true, right? थोड़ी मजबूरी है लेकिन हमारी मनमानी होती है। That's right, Mudhujan, and this whole song is about paradoxes. Who's the writer of the song, man? It's an amazing song, Mudhujan. Yes, amazing song. Javed Akhtar Saab ki hai. Music by Jatin Lal, by the way. Yeah, it's a beautiful song, Mudhujan, and at the same time, one thing I remember that Mahima ji had said was, we call it jugadu, but she said resilience. Yeah. Ki in spite of everything, in spite of you could be dying, but you will somehow find the strength and the courage to go on. Yeah. And that is what unique to our culture. That's to Indians, क्योंकि गिरते हैं, but you pick yourself up and you move on. Supposed to. Yeah. Hello, नमस्कार. आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के मातृभूमि मंगलवार में. Who is this? Hello. Oh, Vande Mataram again. Vande Mataram. Hope I am not holding. कोई अगर कॉल करना चाहता है तो मैं Hello, रख excuse रही me. हूँ। You're on a phone line. We can't see who you're holding on to. What? She said. तो बाबा एकदम ready रहता है। Answer. Excuse सही me. में। You just not told. I hope you're holding on. How will we know that thing? Yeah. You might be holding on to Gopal for, or I don't know. What? Her son I'm talking about, Tejas. Ah. हाँ. So, Deepa, very good. How are you liking this show so far? Are you liking it? Is it up to your liking? हाँ,
हाँ, लेकिन ये क्या बोल रहे थे हिपोक्रिटिकल, ये वो सी वी कांट से दैट नहीं कि सिर्फ इंडियन लोग है। हिपोक्रिटिकल अगर आदमी है तो इंडियन भी हो सकता है, चाइनीज भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट इज अ ह्यूमन क्वालिटी, यू कैन नॉट स्पेसिफाई दैट टू ओनली इंडियन। ठीक है, तो बुरा क्यों माने यार? लेकिन उस हेलो हेलो उसको नहीं, वो मान गाना भी मुझे पसंद नहीं है। वो क्या घुसा मतलब मलमल के घुसा मारने का सॉन्ग है वो। आई डोंट लाइक कंबल में दैट। घुसा मारने का song, oh my God! Oh my God! नहीं दीपा, I have to disagree with you completely on this. I'll tell you why. Because it takes gumption to be able to say something like that. Yeah. To be अरे able to ठीक है hold बाबा। on. ठीक है, सुनो देखो वो भी एक क्वालिटी है हम लोगों की। मुझे तो करने दो। हाँ, बताइए। हाँ, ठीक है। To be able to own it and say सिर्फ भी दिल है हिंदुस्तानी, this is us. say कि हम तो ऐसे हैं भैया, at the end of the day it doesn't matter. Yeah. That requires pride यार, that is देसी pride. कौन बोल सकता है ऐसे? तुम एक कल्चर दिखा दो जिस कल्चर को दीपा, you कोई can- I can- दूसरा बाहर वाला चाहिए नहीं है हम लोगों को। दीपा- हम खुद अपने पे गाली देते Yeah, Deepa, the point. हाँ, exactly. So, Deepa, the point is, you know, you're accepting the fact that nobody is a saint. See, I don't think anybody is a saint. Even the person you call, Yeah. point to me and say that's a saint, I can find something which is not. He's not a saint. So, what the point I'm making is, it is very spiritual to understand this concept. It's saying that there has to be some rascality in you to be able to be a human being. Yeah. Otherwise, you're नहीं God, right? बाबा, मैं वही बोल रही हूँ। This has nothing to do with India में बोल रही हूँ। So that comes नहीं under बाबा, human, not like the pride. So, why you think Indians aren't human beings? नहीं, मैं वो क्वालिटी हिपोक्रिटिकल नेचर में बोल रही हूँ। अरे बाबा, that is fine. So, what we actually, at least we are opening up to it, na? We are owning it, right? We're saying yes, this is we're this way also, we're that way also. Yes. That's paradoxes. Life is all about yin and yang, right? Yeah. So you have a little bit of Yeah. this and you have a little bit of that. You might say some other culture, some other community, some other country does that, but I am saying that we can own up to it and say yes, we do it. Other people will not say that, right? हाँ. Right? You with me on this? हाँ. हाँ, कोई So फिल्म in स्टार spite- बनना चाहता है, उसकी मजबूरी है हाँ. कि वो इतने प्रोड्यूसर्स के पापड़ बेले, हाँ. लेकिन उसकी मनमानी भी तो है कि वो Yeah. फिल्म स्टार बनना वो चाहता जाके है। पापड़ बेले. हाँ, उसकी तो मनमानी है. So that's the paradox we're Yeah. talking about. Yeah. And that only is so prevalent in our country, and I Yeah. think in not country, I would say in that Indianness, in that Bharat that we are, Yeah. that we are able to own it and say that that's what we are. It's Yeah. okay. It's fine to be the way we are. Yeah. It's- But Deepa, I'll tell you one thing. No matter ठीक है, what ठीक it है, is, मैं- Deepa, मैं- hold मैंने on. एक Deepa, चीज़ बोला, Deepa, जो Deepa. प्रणब जी ने बोला, एक्चुअली दैट वाज माय सेकंड पॉइंट। आई 100% एग्री विथ हिम। Yeah. तो उस पे ही मैं थोड़ा ऐड करूंगी कि या लाइक व्हाट ही सेड, लाइक वेरी हाईली एडप्टिव, दैट इज सो ट्रू। Yeah. क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वी मे नॉट लुक मॉडर्न आउटसाइड, हम लोग पहनावे से दिखावे से मॉडर्न नहीं हो सकते, हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा जो ये है ना द सोच, दैट इज वेरी मॉडर्न एंड वेरी डेयरिंग। वी आर कौन मतलब वी oh, that's why only arranged marriages exist in India. You completely have that full faith in a stranger. Yeah. And also as per the job, तो Yeah. कोई भी कंट्री में ऐसे ही मतलब कोई भी जाके only Indians do that maximum, like not because they don't have a job in India, ऐसा कुछ नहीं है. It's that daring nature of us which makes us go places and adapt. तो एक जोक भी है ना कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पे गया, उससे पहले उधर एक टी स्टॉल डोसा स्टैंड था ऑलरेडी। चाय का दुकान था. Yes, yes. so anywhere in the country जाओ, जाके बस जाते हैं और अपना घर बार उधर ही शुरू करते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं, and then they still keep that innate value of their Indian, and at the same time they are highly adaptive and highly courageous. That I have realized myself after coming to US. Deepa, I'll tell you one thing. I think that you are also highly creative, highly, courageous. I feel that about you. So good. That's what I want to tell you. Thank no you, matter thank you. what. But see, ये आप लोग मानते हो ना कि बहुत डेयरिंग, मतलब इतना आसान नहीं है. Many people whenever I meet from here, वो उनको मतलब हम लोग बोलते हैं कि like for example मेरी neighbor, वो बार बार वही सवाल पूछ, oh, all your family is in India, how come you guys are all the way here? तो मतलब उनको अजीब लगता है कि ऐसे कैसे लोग रहते हैं इतने दूर, like and अपना खुद का इधर छोटा सा दुनिया बसा लेते हैं.
it's very they can't understand that gravity, and they don't think they can ever do it. ऐसे वो लोग बोलते हैं. उनको क्या मालूम? इधर दीपा, के it's common in India. That's what I'm saying. दीपा, उनको अखंड भारत क्या मालूम? Exactly. Yeah. And of course, I'm sure they don't know about the fact that the radio show called Radio Dihoti is connecting you guys with whatever culture is there. है ना, Deepa? Yeah? Yeah. They got, yeah, that's it. I'll give Deepa that way. Deepa, you're very smart that way. By the way, don't worry, I have a beautiful song on a close out the day today, and you will definitely say, Altuva, that's wonderful. Much for that. Yeah, Thank you, exactly. thank you. Exactly. Thank and you so thank much you for the call, and thank you for the viewpoints. Until you again, Deepa, no matter what our viewpoints are, with this, that, or basically, whatever it is, you might support Trump, it's fine. We still love you. Thank you. Same here. Thank you, Deepa. Yeah. Hello. Bye. Have a Thank you nice so much for evening. calling Bye. in. Have a good one. And Jan, many people out there actually are of Trump. I understand. Okay, we still love you. Simple and plain. We still love you. That's what our culture taught us, to love everybody the way they are. And we'll show you the light. Just kidding. You will eventually see the light, is a point, Faltoni. Eventually see the light. Yeah. But one song I had definitely had Rajit Bhattasab asked for, which actually talks about the people of everybody's talking Indians right now, right? Yeah. This country is filled with people who are like, go-getters. Dilip Kumar and Ajit ka film Badajan. That is actually a song from the movie Naya Daur. That our dear Ranjit Singh Bhatia साहब requested. इस गाने के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे, right? We're almost coming to. No, एक और गाना रहेगा. One more, देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में. And of course, Bachchan by Mohammad Rafi Saab and Balbir ji. Lyrics by Sahil Ludhiani Bachchan. Open air का music था from the movie Naya Daur. पेड़ों पे बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती हैं कलियां गालों में. कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे. And of course, Bachchan, that's very true, Bachchan. That's exactly what we are. If you look at it, we are the people who are party people. All through the year, we have festivals. Somebody asked the question, one of those meetings, we went to diversity meetings, and they asked me like, so what is it a festival time for you? I said, yes. What are the festivals you have in India? I said, January to December, we have one festival or the other. Exactly. We party. We love to party. It starts with Lodi, Shankranti, then you have Ugadi. You have Holi, you have Ugadi, you have something else, and something else comes up. Then again, we get into Diwali, we get into Eid, we get to all those things. Yeah. So many different festivals that we have. Diwali, and it just keeps going and on and on. Hey, Christmas is also our festival only, right? Yeah, of course. Yeah, everything is our festival. And of course, right now I can tell you, while running out of time, that's why I'm going fast, I suppose, in my speech as well. But I need to play a nice song for Deepa, I promised. So it's a nice song, Deepa. Enjoy the song, okay? And you will love the song, and I told you, you will like the song. Ye gana enjoy kijiyega. With this, we're going to be signing off. Yes, and it's a beautiful song, Bachchan, and it's a song that highlights the beauty about being Indian. Yeah. And we'll see you tomorrow morning right here, inshallah, in Ganesh, with Good Morning Bay. इजाजत दीजिए. Good night, शब्बा खैर, वंदे मातरम, जय हिंद.
भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, क्योंकि भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, यूं चांद देना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का आजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमारा नाता है, कुछ और न पाहो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। And a beautiful song by I don't know which movie it's from. It is from a movie called Pura Pachim Badhujan. A nice song, Mahendra Kapoor ki आवाज. And with this we're going to be saying good night. Shabba khair. And a प्यार भरा. इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस
उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। Bandhajan, this is your darling Faltu Rani, and let me tell you, Bandhajani, that